I'm so excited about this video because I think मैंने अपना last long proper full video what I ate in a day during lockdown किया था. But I can't wait to show you guys what my meals look like these days. So let's get started. If you've been following me for a while, you would know that मेरा एक phase था where I was obsessed with chia seed puddings for breakfast, and these days it is overnight oats. बहुत easy होते हैं to make, and I love that इससे ज़्यादा easily आप bored नहीं हो सकते because there's so much that you can do in terms of flavors. And today I'm making a chocolate version. I'll quickly show you how I make it. सबसे पहले in my bowl I'm gonna add some milk. इसमें डालेंगे अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1 scoop of protein powder and some maple syrup which is optional. And into this I am going to put the rolled oats. एंड इसको बस अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट. आई मेड वन बोल फॉर माई सेल्फ लास्ट नाइट एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इफ यू वांट टू मेक इट थिकर यू कुड ऑल्सो एड इन सम चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड पाउडर. एंड अपने ओवरनाइट ओट्स के साथ आई ऑल्सो लाइक ईटिंग अ कपल ऑफ सोक्ड आमंड्स. Almonds are a powerhouse of biotin, which is a vitamin that helps promoting hair growth and overall hair health, and which is why eating these has become almost like a ritual for me. Just like using the L'Oreal Professional Serioxyl Advanced Serum. And how has this become a ritual? Because this serum is magic. It helps in growing new hair. Amazing, right? And how it does that is because of its magic ingredient 5% stemoxidine, which promotes hair growth and keeps it healthy and shiny. Now you know why this serum is a part of my hair care routine. It gives my hair the much needed care and keeps my hair looking its best. By the way, I am eating my overnight oats with strawberries, freshly chopped strawberries because they're in season and I love them. And इसके साथ I think I'm also gonna add a dollop of peanut butter. You could use any nut butter that you like, and if you try this recipe, let me know in the comments because I think you're gonna like it as much as I do. I know that this doesn't look as delicious and a lot of people are skeptical of eating oats, but trust me, it's so good like this, actually yummy. And it keeps you full for a long time, which is amazing. So मेरा lunch is usually paneer with roti or dal with chawal, but I recently made this very interesting dish with cauliflower and gajar, which I've been obsessed with and I'm making it on repeat. इसका first layer is a very nice garlicky hunkered yogurt situation. उसके ऊपर we will put our roasted cauliflower and carrots, and finally a drizzle of a coriander feta dip on top, which is just delicious. So बनाते हैं. सबसे पहले I am going to add some olive oil in my bowl with spices. आपको जो भी spices अच्छे लगते हैं you could use those. I am going to use salt, pepper, red chili powder, some dried garlic with ऐसे जो भी मन में आए you can add. So जो olive oil and spices का marinade है that is ready, and इसके अंदर अब मैं डालने वाला हूँ chopped carrots and my cauliflower florets. Guys, इस पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि हम गोभी और गाजर का अचार बना रहे हैं, but that is not the case. इसको मैं रोस्ट करने के लिए ओवन की ट्रे पे डाल दूंगा and we'll bake it until it becomes crispy and crunchy. And while our vegetables are roasting in the oven, let's make my favorite coriander feta dip. बहुत सिंपल है, बस ब्लेंडर में डालेंगे बहुत सारा कोरिएंडर, साथ में फेटा चीज, थोड़ा सा गार्लिक, लेमन जूस एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड वाटर. And now I will blend all of this together.
अब गाइस असेंबली स्टार्ट करते हैं फाइनली. सो सबसे पहले एक प्लेट में आई एम गोना पुट अ जेनरस लेयर ऑफ दिस गार्लिकी हंग कर्ड. इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे रोस्टेड वेजिटेबल्स, a drizzle of the coriander and feta dip. बहुत 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 ही ज़्यादा यम है. I love the garlicky yogurt and the lemon juice in the dip is just amazing. Guys, ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना. And I would love for you guys to make this and send me pictures of your version. And of course, आप इसमें कोई भी vegetables roast करके डाल सकते हो. Pumpkin, beetroot, all of it would taste so good. And you can thank me later. So guys, dessert में what I am eating today is a bliss bite. इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा simple है. And it's healthier than anything else that I would possibly eat for dessert otherwise. इसको मैं एक ऐसे बिग बैच में यूजली बना देता हूँ. एंड यू कैन कीप ईटिंग इट ओवर द नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट 2 वीक्स. कुछ नहीं करना है, बस ब्लेंडर में सबसे पहले सोक्ड डेट्स डालने हैं, उसके साथ रोस्टेड आमंड्स, रोस्टेड वॉलनट्स, अगर कोई और नट्स है जो आपको पसंद है आप वो भी डाल सकते हो. इसमें आई ऑल्सो ऐड सम ओट्स जिसको भी आप रोस्ट कर सकते हो इफ़ यू लाइक, अलॉन्ग विद कोको पाउडर एंड थोड़ा सा वाटर फ्रॉम द सोक्ड डेट्स. और सबको साथ में ब्लेंड कर लेना है एंड यू विल गेट अ वेरी स्टिकी मिक्सचर. इसको या तो आप जस्ट बाय रोलिंग बिटवीन योर पाम्स ब्लिस बॉल की शेप दे सकते हो, और यू कुड पुट दैट मिक्सचर into a silicone ice cube tray and shape it into bliss bites like I did, and then dip them in some melted chocolate, which is completely optional. And this is actually great because ये काफ़ी ऐसे satisfy कर देता है cravings while not being इतना unhealthy also. सो आज का ओरिजिनल डिनर प्लान वॉज टू ईट एग करी विद रोटी, बट मुझे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एंड यमी खाने का मन था. सो आई रिक्वेस्टेड मॉम टू मेक माई फेवरेट एग सैंडविच. ये मैं नॉर्मली कभी कभार ब्रेकफास्ट के लिए खा लेता हूँ, बट ऐसे रैंडम क्रेविंग हो रहा था. सो आई थॉट इट बी अ गुड आइडिया टू ईट दीज फॉर डिनर इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. एंड as you can probably tell, मुझे थोड़ा सा लग रहा है that I am gonna catch a cold and my throat is being annoying. So I also have some homemade broccoli and almond soup here, which I really like. Perfect for this weather. ये मॉम ने बनाया है. अगर आपको चाहिए, if you want, I can request mom to share the recipe. मुझे comment करके बताओ if you like the broccoli almond soup का recipe. And I also have some asparagus here, which is just basic sauteed asparagus with chili flakes and salt. Nice snack. And the egg sandwich I'm going to dip in the coriander feta dip that we made for lunch. बच गई थी, so I'm going to eat the sandwich with that. Yummers. So this was all my meals for today. This is similar to what I eat on an everyday basis. Let me know आपको मेरा कौन सा meal सबसे ज़्यादा interesting लगा. And if you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you guys next week with a brand new video.